हम लोग के जैसे बिजनेस में क्या हो, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग के एक नॉर्मली क्या होता है कि आप एक स्टाफ रखते हो, आप एक टीम रखते हो जो कि आपको रखनी पड़ती है, एंड वो डायरेक्ट वो डील करता है कस्टमर से। बट हम लोग के जनरेशन में ये होता है, हम लोग के एक बिजनेस में, ज्वेलरी बिजनेस में आपको पर्सनल टच अपना रखना पड़ता है। अपनी आइडेंटिटी आपको एक सामने कस्टमर्स के सामने लानी पड़ती है। तो जब आप वो जब स्टार्ट करते हो तो आपकी मतलब एक आपके अपनी सिटी में एक वैल्यू बनती है। फिर आपके बिजनेस सारे कस्टमर्स आपके आते हैं, सामने आते हैं। एंड फिर उसको मॉडर्न इनोवेशन के साथ, अगर आप एक मॉडर्न ट्रेंड के साथ उसको आप फॉलो करते हो, कि मतलब आप कोई भी चीज, जो भी ट्रेंड, लेटेस्ट ट्रेंड है, या जो मार्केट का सोशल मीडिया है, या आपका ई कॉमर्स है, आप सबको लेके जब साथ में चलते हो तो आप कभी भी बिजनेस को आप पीछे नहीं कर सकते। और उसके बाद जब आपकी एक जनरेशन, नई जनरेशन विद प्रॉपर एजुकेशन ऑफ डायमंड, GIA, एंड एक आपका एक MBA, जब आप उसको साथ में करते हो तो फिर आप एक तरीके से उसको इतना आगे ले जाते हो, पीक में ले जाते हो। फिर आपको एक इंटरेस्टिंग लगने लगता है, एक ज्वेलरी का बिजनेस में भी इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है कि आपको लगता है कस्टमर्स हैं, फैमिलीज आ रही है, आप उनसे बातें भी करते हो, आप उनके टच में रहते हो, आप उनकी वेडिंग की बातें करते हो। आप ज्वेलरी तो सेल कर रहे हो, पर आप एक इंटरेस्टिंग वे में उनसे बातें करते हो। तो वो क्या होता है कि एक एक इतना अच्छे कॉन्टेक्ट, पर्सनल टच बन जाते हैं, पर्सनल कॉन्टेक्ट बन जाते हैं, फिर आप आगे उसको नेक्स्ट जनरेशन तक पास कर सकते हो। Personalized customer service, which we have been maintaining it since the inception of a business. I mean, I have been hearing my forefathers say this, like my grandfather say this, and my dad has been saying this, that you have to give personal attention to each customer, wherever you can manage, whatever extent. That's something which is maintained. Then the craftsmanship, if you talk about the jewelry, the craftsmanship, I mean, so we have been famous all over the city for Amritsari Jadao jewelry for a long time. Now, Amritsari Jadao jewelry has all kinds of gemstones involved in it. Not, I don't know if everybody knows about that or not. So in that we have all kinds of rubies, emeralds, and on we have kept, this tradition of only using the high-end stones. I mean, these days a lot of synthetics have come in the market, which are getting used in this kind of jewelry. So that finish is not there in that. So we don't compromise. We have been using the same kind of craftsmanship, the same kind of stones, the real ones. In diamond also we have always been using that, the near colorless bracket, I would say, GH color, not even somewhere to extent HI, but not below that. So we try to maintain that, value in terms of the quality we give to the customers. Then obviously we talk about generational differences. Like as you mentioned, if you go home, we talk about, different mindsets you have. Like my dad wants to do this, I want to do that. My brother might want to do something else. So to get on the same page, because we three are on the same position, right? We three are the people who want to or the decision makers. So now if you talk about decision makers, if it's the same, then sometimes, as you see, it might get delayed. What exactly you want to do? Because we can't get to agree on the same platter. It's something which is important. But obviously, since our common goal is customer satisfaction, we try to come to a point in which, there is everybody agrees to it. So we have to manage that. I think that's a challenge. Like for example, in terms of marketing, talk about a lot of people are using, we try to use a lot of influencers, or, the marketing budget is increasing these days as compared to the previous time. So, talk about that we have to spend that much on marketing, not like initially, at the olden time, that was not the case. So a lot of things, example, there are things which you need to, plan and finalize and come at a single point. So I think then there's a resistance, there's a change, there's a resistance to change. Again, the same point. There are some, in terms of operational things, we want to get it done, utilizing, all the data in computers or whatever, then doing about handmade thing, then it's like, no, for example, if I want to get bill made totally without any usage of any physical copies, my father might come and say, no, we need physical copies. Where are physical copies? A bit of data might, get deleted, unknowingly, that whether it's cloud or not. You need that there should be some physical presence. So a lot of examples in terms of accountancy is an operational thing which you need to come to a platter. Then obviously one of the major factors is emotional pressure, I think. It's a big challenge. I mean, it's both ways. See, emotional pressure from within the family to take on the reins of your previous members the way they have been doing, because you have to carry a big name on your shoulders. Also from the consumer point of view, customers might want to, get the same experience which they have been getting from your father or, from your forefathers. To maintain that is also, I think, a big challenge. That's the emotional connect which you need to mother. And I think GIA credentials help me a lot. I mean, if I talk about how does GIA helps, how has it helped me? So there are two factors, I think, which the most important ones which have helped me. First is knowledge. Now, if you have some knowledge, I mean, if you know exactly what kind of stones you're selling, what kind of jewelry you're selling, what kind of stones if you're buying from customer, then you have the upper edge. I mean, you are very confident that, whatever you're buying is at the right price. What you're selling is the right price. So there's no second thoughts at all.
even the customer, get some confidence on us, because they know that I have some knowledge about this. I mean, I have the knowledge of the crystal structure. If you go too deep, the chemical composition. I mean, if you can tell the customer about that not many people know about that, even till date, then customer believes you. And if they believe us, then automatically, half the job is done, because this majorly depends on trust, developing a trust this way. So knowledge is something which has really, helped me through GIA, which I've got. Second is the credibility factor. Great. Let's start. Warm welcome to our guests to the October edition, the 22nd in the series of the online knowledge series. Our guest, Mr. Akshay Chawla, and his father, Mr. Sanjay Chawla of Punjab Jewellers and Sons. And warm welcome to our alumni attending today. Today we'll be in discussion with this father-son duo about their legacy, the brand, the values, and much more. So, to briefly talk about them, Akshay is a sixth-generation jeweler at Punjab Jewellers and Sons, one of the leading fine jewelry brands in Lucknow. A legacy which is spanning for more than a century, over 100 years now. Akshay joined his family business, Punjab Jewellers and Sons, in 2012, and since then, he's been playing a key role in achieving greater milestones for the brand. He was also featured in the renowned Retail Jeweler magazine under the segment of leading young jewelers in India. A graduate from India, and then he pursued his post-graduation in London, in England rather. And now about the person from whom Akshay and his brother received this legacy, Mr. Sanjay Chawla. So Mr. Sanjay Chawla has successfully been managing the business for Punjab Jewellers and Sons for more than 4 decades now. He has been the cornerstone in the company's success. And to his credit, he is one of the first few jewelers in Lucknow to introduce diamond jewelry in the late 1980s. And his expertise in assessing the quality of diamonds, his knowledge about gemstones and all actually sets him apart. So this team of Punjab Jewellers and Sons, father-sons team, they've been serving generations of families over a wide range of fine jewelry, including gold, diamond, kundan, polki, silver, and the variety that we can talk of. So I'm excited to be in discussion with them, hear more from them. And for that, I turn it over to Shiv now. Thank you, Manisha. And once again, a very warm welcome to Akshay and Sanjay ji for being a part of the Legacy of Leadership knowledge series. And welcome again to everyone who's listening in online. So I want to get straight to the legacy, which is the topic, right? And Manisha already gave a glimpse of it. A century, right? I mean, there is no way in which that can be, looked at from a different lens, and a century is a lot. But let's unpack it for us. Sanjay ji, if I could request you, please talk us through the journey of how Punjab Jewellers and Sons came to be, and if you can talk from right from the moment of its inception, that'll be great. Yes. Good afternoon, everyone. Yes, हम लोग का एक्चुअली वी स्टार्टेड, हम लोग को 1880 में हमने स्टार्ट किया था. हम लोग के जनरेशन ने, हम लोग के पुराने एंसेस्टर्स ने स्टार्ट किया था 1880 में, एंड लाहौर में दे स्टार्टेड बिजनेस. एंड लाहौर में 1880 में देन जितनी भी रॉयल फैमिलीज होती थी वो जेम्स देते थे, मे बी वो डायमंड्स, कलर स्टोन्स एंड उसकी ज्वेलरी. तो जो हम लोग की जनरेशन, हम लोग के जितने भी ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो सब लोग स्टार्ट करते, वहीं पे ज्वेलरी का लाहौर में स्टार्ट किया. अनारकली बाजार था वहां पे, कोई अनारकली बाजार में दे स्टार्टेड. फिर वहां पे बिजनेस हम लोग का मतलब एक जो भी फर्म्स के नेम थे वहां से स्टार्ट किया, एंड उसके बाद करते करते फिर पार्टीशन हुआ, एंड पार्टीशन के बाद हम लोग इंडिया में आए यहाँ पे, एंड जयपुर में, दिल्ली में, कानपुर में, एंड देन लास्टली वी सेटल्ड इन लखनऊ. तो हमने लखनऊ में अपना एक पंजाब ज्वेलर्स का मेन यहाँ भी हमने ओपन किया, एंड हम यहाँ पे सेटल हो गए.
एंड दैट उसके बाद वो स्क्रैच से एक्चुअली स्टार्टिंग थी कि वहां से सब आप आए थे, वहां से लाहौर से सब छोड़ के आना, सारे बिजनेस को छोड़ के फिर आपको एक, आप ज्वेलर थे तो आप ज्वेलरी बनोगे, फिर स्टार्ट करना। फिर वो एक हमने रेंट की दुकान यहाँ पे ली अमीनाबाद एक है लखनऊ में, एंड एक रेंट की छोटी सी दुकान लेके हमारे ग्रैंडफादर ने एंड मेरे फादर ने वहां पे स्टार्ट किया। एंड फिर तो ये कब की बात है? ये है 1950s के आसपास, 1950s आफ्टर पार्टीशन। पहले जैसे आप 47 में पार्टीशन के बाद 47 में जयपुर गए, फिर वहां से दिल्ली में बहुत जॉइंट फैमिलीज होती थी तो ब्रांचेस बनते गए, एंड फिर कानपुर में होने के बाद फिर एक लखनऊ में आए। तो 1949 एंड 1950 में हम लोग की शॉप खुली थी यहाँ पे लखनऊ में, एक छोटी सी दुकान हमने रेंट में लिया था, एंड फिर वहां से स्टार्ट किया। फिर वहां से स्टार्ट करते करते बहुत हार्डवर्क करके वहां पे, जैसे हम लोग की शॉप 8:30 सुबह मॉर्निंग में खुल जाती थी एंड 11:30 तक क्लोज होते थे, टाइमिंग्स थे 8:30 टू 11:30। तो वो क्योंकि वो स्टार्टिंग थी एंड क्योंकि वहां से हम लोग होके आए थे तो यहाँ पे कोई ऐसे नोन भी नहीं थे, तो फिर एक पंजाब ज्वेलर्स का नाम दिया, बीइंग अ पंजाबी, एंड मे बी वो पंजाब ज्वेलर्स का नाम। एंड पंजाब ज्वेलर्स की अब तो बहुत शॉप्स खुल चुकी हैं ऑल ओवर इंडिया में, बट हम लोग की फर्स्ट वन ऑफ पहली दुकान थी पंजाब ज्वेलर्स की। जो नाम आप देखोगे तो पहला लखनऊ में पंजाब ज्वेलर्स था, फिर बाद में ब्रांचेस कई अलग अलग जगह में खुली। फिर एक एरिया था, छोटा सा एरिया पहले अमीनाबाद, वहां पे स्टार्ट करना, वहां पे एक अपने सारे कस्टमर्स के साथ हैंडल करना, सबको फेस टू फेस बात करके एक अपना मतलब एक बेस्ट वे में आप उसको डील करना। तो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, सबने बहुत सब कुछ करने के बाद फिर मैंने भी उसके बाद 80s में मैंने ज्वाइन कर लिया था। 80s 1985 86 में मैंने ज्वाइन किया, जब मैं ग्रेजुएशन ही कर रहा था तो हमको ज्वाइन करा दिया। पहले ज्वेलरी में होता था जितनी जल्दी बैठ जाओ उतना अच्छा बिजनेस होता है, तो 17-18 ईयर्स में मैं बैठ गया था वहाँ पे, 18 ईयर्स भी होंगे, सेकंड ईयर था तो स्टार्ट किया फिर वहाँ पे। फिर वो होता था कि क्या करना है एंड प्लानिंग होती थी, लेकिन ज्वेलरी से अच्छा कोई बिजनेस तो यही नहीं है। हम लोग तो कितने लकी हैं कि हम लोग ज्वेलर बने, हम तो सबको ये बोलेंगे कि ज्वेलर बनना मीन्स बेस्ट, इससे अच्छा कोई आपका कोई बिजनेस नहीं हो सकता। बहुत मतलब एक डिफरेंट लेवल का होता है एक ज्वेलरी बिजनेस। फिर वहां से स्टार्ट करने के बाद फिर उस समय जो क्राफ्टमैनशिप थी वो एक ये होता था कि वहां पे एक जो मेन जो कारीगर होते थे वो हाथ से बनाते थे। इन वो टाइम्स हमने देखे हुए हैं जो हाथ से बना के 10 डेज में सेट्स बनते थे, एक से एक डिजाइनर सेट्स बनते थे, डिजाइनिंग ज्वेलरी बनती थी, वो उस टाइम में हाथ से काम होते थे। एंड मतलब तब इतनी मशीन्स नहीं थी, तब लिमिटेड डिजाइन होते थे, मतलब लिमिटेड डिजाइन की, जैसे आप बैंगल्स की बात करोगे तो तब टोटल मिला के 10 या 12 बैंगल्स के डिजाइन ऐसे होते थे जो एक मेन डिजाइन होते थे, तो उसी में लोग ऑर्डर्स देते थे। कोई कहता था मेरी 15 चूड़ी बना दो, कोई 20 चूड़ी बना दो, इतने सेट्स बना दो, तो एक लिमिटेड डिजाइन से स्टार्ट हुआ था ये। फिर धीरे 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 डिजाइन बढ़े, फिर उसके बाद फिर आगे एक्सपेंशन, क्योंकि जैसे जैसे इनोवेशन चल रहा था, जैसे जैसे मॉडर्न टाइमिंग्स चेंज हो रहे थे तो हम लोगों ने चेंज किया। फिर उसके बाद जब हम लोग फिर अक्षय और आदित्य दोनों ने मेरे दोनों अक्षय एंड आदित्य, मैं बोथ सन्स, इन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने अपना MBA करने के बाद इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, GIA किया, प्रॉपर कोर्स करने के बाद फिर ज्वाइन किया। एंड डायमंड का मैंने 1985-87 में हम बॉम्बे गए थे, एंड 85-86 में मैंने बॉम्बे में डायमंड की ट्रेनिंग तब ली। तब ये कोर्सेज नहीं होते थे। तब क्या होता था, मैं रात को बैठ के, जैसे होता था ना, रात को सोने से पहले मैं सारी बुक्स पढ़ता था, डायमंड्स की बेस्ट कौन सी थ्योरी की बुक्स होती थी, एंड मॉर्निंग में जाके वही चीजें हम देखते थे कि क्या चीजें हैं डायमंड्स में, क्योंकि तब कोर्सेज नहीं थे। तब आप असॉर्टर्स बैठे होते थे तो आप उनसे ट्रेनिंग लेते थे, जो मेन होते थे उनके पीछे जहाँ पे एक आपका रूम होता था वहां पे आप ट्रेनिंग लेते थे। एक डायमंड को उठा के देखना, फिर वो प्रॉपर्टीज देखना, फिर रात को बुक में पढ़ना, फिर सुबह आके देखना। तो तब वो 2-3 बार हमने बॉम्बे विजिट किया, फिर वहां से हमने डायमंड स्टार्ट किया। तो ज्वेलरी डायमंड की अमंग द वन फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम हो गए यहाँ पे स्टार्ट करने वाले लखनऊ में। एंड मेरी शॉप में जैसे हम लोग का था अपना भी लखनऊ में, तो डायमंड ज्वेलरी का वहीं से स्टार्ट हुआ। मेन पहले गोल्ड में ज्यादा होता था, गोल्ड एंड जड़ाऊ ज्यादा होता था, बट डायमंड ज्वेलरी वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे डायमंड्स में सबको पता है लखनऊ में कि हाँ अगर बेस्ट डायमंड्स लेने हैं, डायमंड्स की बेस्ट डायमंड ज्वेलरी है, कोई भी बेस्ट लेनी है तो पंजाब ज्वेलर्स एंड सन्स आपको चलना है। और जनरेशन टू जनरेशन फिर आज भी, फिर उसके बाद अक्षय ने ज्वाइन किया, आदित्य ने ज्वाइन किया, दोनों ने प्रॉपर कोर्सेज किए, कोर्सेज करने के बाद ज्वाइन किया। आज क्योंकि पुराना लेगेसी का टाइम एक ऐसा था कि एक हमने हर चीज से फेस से देख के आगे बढ़े, अब मॉडर्न ट्रेंड के साथ हम दोनों ने सबने मिलकर एक स्टार्ट किया आगे बिजनेस। तो उसमें मतलब एक डिफरेंट लेवल्स आ गए। अब तो आपके लेटेस्ट मशीन की टूल्स आ गई हैं, लेटेस्ट आपकी सबको उसको करते हुए हम लोग ने अपने आप को पूरा मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। एंड अक्षय और आदित्य ने जब से ज्वाइन किया तो जो बिजनेस हमारा चल रहा था अच्छा बिजनेस, वो और आगे बढ़ गया। एंड मतलब आते हैं सर हम, because my next question, so first thank you for telling me from that time when the business started in Lahore in 1886 you said? 1880
1880s Yeah. to 2024. That is certainly a journey. Beautiful. Thank you for telling me how things have evolved. Akshay, my question to you is now, Sanjay ji, of course, spoke about how he certainly seems like a very proud parent to tell that मेरे बच्चों ने business join किया है and jewelry line में है. He's very proud of that. Now, I want to ask you a question. There is generally this, you know, perception that the younger generation doesn't want to join the jewelry business. This is something that we hear on and off. Now, of course, there are passionate people like you. But my question to you, Akshay, is what made you? What was that decision that went around in your head and said, "Ki, I want to join my family business"? And uh, sir also mentioned that you I think he insisted on you taking up formal education, whether it is your MBA, whether it is a GI credential. I think the emphasis on education is quite clear. So, speaking about GI credential, if you could tell me how does it help you in your family business, which I would love to know what inspired you to join. So I think you are absolutely correct when saying that a lot of people don't want to continue their family businesses in the current times. For me, I have been seeing my forefathers, my father, my grandfather, my uncles working so hard since I've known about the current business scenario and all that. The base which they have established, working so hard, the success they have achieved, the foundation which they have made it so strong. It always felt like kind of my duty to get it, to enhance it, because I have seen them working so hard all through the day, through the years, that I felt like it was my duty to contribute to its growth. So this is something which is very personal, right? But again, having said that, the trade in itself is a very beautiful trade. Jewelry is a very interesting trade. It has innovation, it has craftsmanship, it has creativity. So everything is built together. So I mean, why, if I would like to join the business, why not the jewelry sector? So since I've seen them work so hard and there was a base established for me, then this sector was one of the most lucrative one for me to get into it, because of the way things are changing and the creativity which people wanted to enter into trade. So then it worked like that, and then gradually I think I made a good decision to widely enter that. And once I entered, I thought that I want to make a mark in the coming years, because this business has already been been part of my family legacy for so long, and to enhance it, to make it further, it was my sense of inner duty that I need to go forward and create something which was even better than before. That's what I want, and that's why I joined and I continue to do a lot of things, whatever I can in my own capacity. And I think GIA credential helped me a lot. I mean, if I talk about how does GIA helps, how has it helped me? So there are two factors, I think, which the most important ones which have helped me. First is knowledge. Now, if you have some knowledge, I mean, if you know exactly what kind of stones you're selling, what kind of jewelry you're selling, what kind of stones if you're buying from customer, then you have the upper edge. I mean, you are very confident that whatever you're buying is at the right price. What you're selling is the right price. So there's no second thoughts at all. Even the customer, gets some confidence on us, because they know that I have some knowledge about this. I mean, I have the knowledge of the crystal structure. If you go into deep, the chemical composition. I mean, if you can tell the customer about that, not many people know about that, even till date, then customer believes you. And if they believe us, then automatically, half the job is done, because this majorly depends on trust, developing a trust, this trade. So knowledge is something which has really, helped me through GIA, which I've got. Second is the credibility factor. Now, if you get some knowledge, then you have the credibility automatically in you, because people trust you. First of all. Secondly, there is this retailer lookup, segment in the GIA portal. I have registered into it because I'm a graduate gemologist from GIA, and there was this very interesting incident last week. There was this person who wanted to buy a GIA solitaire, GIA certified solitaire, 1.5 carat solitaire. He was looking all over the city to buy, and he even went through everywhere. And he searched us on Google. Maybe he must have gone to the GIA website, and he must have saw us at the retailer lookup section. And then after seeing that, he called me. Then, I somehow managed to influence him to come and visit our store and see the stone, in person. And then he came and he said that I don't want to see the stone at all, because I trust you. The way you're telling me things, nobody has told me. Pricing is something secondary, but the knowledge which I've got, the detailed knowledge, nobody tells. People just want to sell it.
I said, no, I want to make you knowledgeable in this sector. So then automatically it worked out well, and now I've got a very good orders from them. Multiplication is happening, and they need more stones. So I think that also helped me. And so there are a lot of examples, but I think these are the two important ones I need to focus on. Beautiful. Thank you, Akshay, for actually telling that story. It's fascinating. Was this gentleman based out of Lucknow or? He actually is based out of Delhi, but he has settled in Lucknow temporarily. Actually, settled in Lucknow for the past year, working somewhere. And now he told me that since I have that he told me that I was serving about different stones all over the country. I was searching online. I have an old jewelers based in Delhi. I have chat with them also. But even after going through every jeweler, the way you told me about this detailed knowledge, it's like I don't want to talk about the pricing factor. I trust you. Whatever you give me, it will be the best one. So I said, yeah, thank you so much. And then and that's history. Beautiful, beautiful. I love the fact that how the gentleman was able to find you using the GIA's retailer lookup tool. Have you had the knowledge and the confidence to speak to him in a language that he would be able to understand with the knowledge that you have been armed with from GIA? Beautiful. And now you have a client for life, I hope. Yes. My question now to both of you is, and I actually, before asking this question, I want to start off with a fact that I read somewhere. So this is a study that was done in John Cornell University in the US, and it said that about 40% of family-owned businesses, for just 40%, and I will emphasize on the word just 40% of family-owned businesses transition to the second generation. Okay, about 13%, 13% transition to the third generation, and generally about 3% is what survive to the third generation. So the study was basically trying to point out that 3 generations is what sort of it maxes out at. But here's a case study where it's the 6th generation. With this context in mind, I want to ask both of you, what are those values that you think have helped preserve the cultural and the traditional values of a 100-year legacy? And the fact that in today's market, where everything is changing by the minute, if not hours, how do you adapt to that? Right. Sanjay ji, if you could go first, and then maybe Akshay could answer. Yes. एक्चुअली जो बिजनेस जैसे हम लोग का ज्वेलरी का बिजनेस है ना, उस बिजनेस में हमने सबसे मतलब जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का जो होता है, जो स्टार्ट करते हैं, वो ट्रस्ट होता है. एंड ट्रस्ट इज द बेस्ट. मतलब ये ट्रस्ट आपने अगर डेवलप किया तो आप कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो. एंड सेकेंड उसमें आपका आता है फेस वैल्यूज. हम लोग के जैसे बिजनेस में क्या हो, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग के एक नॉर्मली क्या होता है कि आप एक स्टाफ रखते हो, आप एक टीम रखते हो जो कि आपको रखनी पड़ती है, एंड वो डायरेक्ट वो डील करता है कस्टमर से. बट हम लोग के जनरेशन में ये होता है, हम लोग के एक बिजनेस में, ज्वेलरी बिजनेस में आपको पर्सनल टच अपना रखना पड़ता है. अपनी आइडेंटिटी आपको एक सामने कस्टमर्स के सामने लानी पड़ती है. तो जब आप वो जब स्टार्ट करते हो तो आपकी मतलब एक आपके अपनी सिटी में एक वैल्यू बनती है. फिर आपके बिजनेस सारे कस्टमर्स आपके आते हैं, सामने आते हैं, एंड फिर उसको मॉडर्न इनोवेशन के साथ, अगर आप एक मॉडर्न ट्रेंड के साथ उसको आप फॉलो करते हो, कि मतलब आप कोई भी चीज, जो भी ट्रेंड, लेटेस्ट ट्रेंड है, या जो मार्केट का सोशल मीडिया है, या आपका ई कॉमर्स है, आप सबको लेके जब साथ में चलते हो तो आप कभी भी बिजनेस को आप पीछे नहीं कर सकते. और उसके बाद जब आपकी एक जनरेशन, नई जनरेशन विद प्रॉपर एजुकेशन ऑफ डायमंड, GIA एंड एक आपका एक MBA, जब आप उसको साथ में करते हो तो फिर आप एक तरीके से उसको इतना आगे ले जाते हो, पीक में ले जाते हो. फिर आपको एक इंटरेस्टिंग लगने लगता है. एक ज्वेलरी का बिजनेस में भी इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है कि आपको लगता है कस्टमर्स हैं, फैमिलीज आ रही है, आप उनसे बातें भी करते हो, आप उनके टच में रहते हो, आप उनकी वेडिंग की बातें करते हो. आप ज्वेलरी तो सेल कर रहे हो, पर आप एक इंटरेस्टिंग वे में उनसे बातें करते हो. तो वो क्या होता है कि एक इतना अच्छे कॉन्टेक्ट, पर्सनल टच बन जाते हैं, पर्सनल कॉन्टेक्ट बन जाते हैं. फिर आप आगे उसको नेक्स्ट जनरेशन तक पास कर सकते हो. एंड नेक्स्ट जनरेशन जो आपको जब आपको ज्वाइन करती है, अगर आपको बिजनेस उसको इंटरेस्टिंग मिल रहा है, उनको एक, ठीक है, सब लोग एक बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए या आगे करने के लिए, बट आपको एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर मिलता है, आप उसको एंजॉय भी करते हो, और उसके अंदर इतना स्कोप होता है. जैसे ज्वेलरी में बहुत स्कोप्स हैं. मतलब एक ज्वेलरी मीन्स ये नहीं कि आपने एक सेट बेच दिया, आपके कलर स्टोन्स हैं, आपके डायमंड्स हैं, आपके बहुत बहुत ज्यादा आपकी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. हम लोगों ने भी बहुत कुछ अभी किया.
हम लोगों ने भी आगे किया, पर उसमें जब आप ज्वाइन कराते हो, नई जनरेशन ज्वाइन करती है विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, विद सोशल मीडियाज एंड मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लेटेस्ट इक्विपमेंट सारे चीजें, तो फिर वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो बच्चे ज्वाइन करते हैं, जब ये लोग ज्वाइन करते हैं तो और हमको और काम, मेरे जैसे अब मेरे एज बड़ी हो रही है एंड ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो एनर्जी लेवल इनका है वो एनर्जी लेवल उनका मिला और हमारा ब्रेन मिलता है और लेगेसी मिलती है, तो सब कुछ मिलकर आप एक बिजनेस को आज मॉडर्न वे में आगे बढ़ाते हैं। मेरा तो ये कंसेप्ट है बस। Very या good. जैसे पापा ने बोला, Dad, although I can't match his energy till now, I mean, whatever age he is in, I can't even still match his energy. So, energy factor is not something which is. I can sense that. मतलब इनकी एनर्जी मैच कर पाना, So, एनर्जी मैच कर पाना बहुत मुश्किल है. But you have big shoes to fill in. yeah. So I think, as you mentioned that what is which we, I know, definitely, always. Okay, so like one of the most important factors I think in terms of values, what we have, as you mentioned, is the personalized customer service, which we have been maintaining it since the inception of a business. I mean, I have been hearing my forefathers say this, like my grandfather say this, and my dad has been saying this, that you have to give personal attention to each customer, wherever you can manage, whatever extent. That's something which is maintained. Then the craftsmanship, if you talk about the jewelry, the craftsmanship, I mean, so we have been famous all over the city for Amritsari Jadao jewelry for a long time. Now, Amritsari Jadao jewelry has all kinds of gemstones involved in it. I don't know if everybody knows about that or not. So in that, we have all kinds of rubies, emeralds, and we have kept, this tradition of only using the high-end stones. I mean, these days, a lot of synthetics have come in the market, which are getting used in this kind of jewelry. So that finish is not there. So we don't compromise. We have been using the same kind of craftsmanship, the same kind of stones, the real ones. And diamond also, we have always been using that, the near colorless bracket, I would say, GH color, not even some to extent HI, but not below that. So we try to maintain that, value in terms of the quality we give to the customers. Then obviously the personal touch we try to give them, that's always there. So now if you maintain that, and if you change according to the recent trend, like if you, have a presence in social media, if you have a presence through your e-commerce website, we've opened some specific sub brands to catch hold of a niche. Like, we've opened a brand called My Claret, which only deals with office for lightweight jewelry, only catching that segment. Then we have this brand we recently opened a new store called House of Chandi, which only deals in 95 silver jewelry, the designer jewelry, which a lot of people are demanding these days. Then we have specific segment for engagement rings. We call this VWOW. So, if you utilize that and use all kind of technology, then obviously this balance, we maintain that. The values will continue and you can manage, the real atmosphere, the current scenario. I believe so. That's very interesting. One love I want to compliment sir on the energy that he has, and Akshay, the fact that you have to match up to it. I think it's a great task. And him complimenting you on the younger sort of energy and vibe that you bring, I think it must truly be something to watch, especially maybe when you are, talking to customers, because you spoke about how it's important to build those relationships with families, especially when they're dealing with you for a very long time. I want to ask both of you on the perspectives that you have when it comes to the advantages of a family-run business, which I can certainly see that there are many from all that you spoke about, whether it's a legacy or the trust or just the name that you've built for yourself. But also, if you could talk a little bit about what are the challenges that you face as a family business. Like, are there some limitations? Are there any challenges that you face? And think of it from this perspective. And sir, this question is while it's also for you as a parent who's guiding and being the guiding light for the children that are stepping into the family business. Actually, it's also for you as to what are the challenges that you face when you have to talk to so many people in your family, and these are people that you have dinner with, right? You go back to home with. Are there any challenges that you face? Talk about both the advantages as well as the challenges, please. So I think, it's a mixture of both, as you mentioned rightly, that advantages plus challenges. See, so
as we know, everything doesn't have a single story. So it has two sides of the same coin. So I think, so let me talk about the advantages first, which basically is the positive factor, which is more into the, I think that's what has attracted us together to continue this family business. So since, if for a legacy business like ours, which has been continuing for a long time, for decades, there is a strong foundation which has been built. And if you talk about jewelry sector, right? So it is all, it depends on a lot of trust. If the customer has a trust factor involved, then, they will definitely come back to you. And this specific sector needs a lot of, people to trust. This sector depends on trust, actually. Trust, reputation, quality. So that has been established for a long period. So that is a base which I got. That's an advantage of family business. I mean, if you already got a set clientele because they trust you, the parents have been coming to you. So you always have a set base. Similarly, about your stakeholders, your vendors who know they trust you, they will give you the kind of stuff that you want. So both ways. I mean, for the vendors also, the advantageous thing for us and for the customers also, because it has been established. This legacy has been going on. The trust has been developed. There are loyal customers who are already there. So that's a base which you already got. So that's an advantage, I think. Then secondly, I think, the values, the vision. So since it's basically managed by the family people only. So there's a set of values which has been there, and we try to follow that. So now those values have been already established. Like I talked about personal customer service. We know that because we've been following that, right? Then we talk about maintaining quality, maintaining ethics. Like I've been told that you can't. Ethics is a very important factor in our business. That you can only sell this quality by telling them bluntly that this is the net weight of jewelry. This is the gross weight. Example telling you, this is something which you have to believe that. So that's also which the shared vision and value which we have. So that has also been there. Then the focus, we have a focus on, because generational, it will go through generations. So it's a long-term focus which we have in mind. So then that has also some knowledge which we get by taking over this business, an advantage to us. And the most important factor as an advantage, I feel, is the emotional belief, the emotional kick you get. If you know that your fathers have been working, you have been told that you'll be carrying the business further. This emotional thing you have with you, you cannot match the financial, incentive at all. You get a punch, you get a kick that you need to work hard, to establish it further. So then that is a big advantage, because see, if you don't have if you don't have a passion or a drive, then whatever business you'll do, it might not be really well, going forward. But if you have that kick or that drive, then you will automatically do well. So that's an advantage which we get because we have been seeing our forefathers working for it. Yes. I think those are major factors in terms of the advantages. Then let's talk about the challenges, right? So obviously, one of the major challenges is that these days a lot of things have come up, high-end machinery, the different kinds of processes in terms of production. So now, if you want to maintain our old craftsmanship, which involve a lot of handwork, you can't do that because if a certain customer comes with a certain design, it cannot be made by hand at all. A lot of designs are coming up, these which are very customized, and they need to get made through 3D rendering first. Then the cam would come out, then automatically, then you have to go through that process. So then the handwork is, to an extent, is getting reduced. So then we have to maintain that level of craftsmanship. For example, we talked about the using of real gemstones and let's say jewelry. Now we can't. We do use that, but then there is a limitation also. Sometimes people say we don't want that expensive. Since the gemstones are quite on the higher end, then we have to manage that somehow. We have to cut our profits or whatever, but we have to obviously get the product should be as far as what we give them. So then there's one of the thing which you have to manage is the changing trends. Then obviously we talk about generational differences. Like as you mentioned, if you go home, we talk about different mindsets you have. Like my dad wants to do this, I want to do that. My brother might want to do something else. So to get on the same page, because we three are on the same position, right? We three are the people who want to for the decision makers. So now, if you talk about decision makers, if it's the same, then sometimes, as you see, it might get delayed. What exactly you want to do? Because we can't get to agree in the same platter. It's something which is important. But obviously, since our common goal is customer satisfaction, we try to come to a point in which everybody agrees to it. So we have to manage that. I think that's a challenge. Like for example, in terms of marketing, talk about a lot of people are using. We try to use a lot of influencers, or the marketing budget is increasing these days as compared to previous times. To talk about that we have to spend that much on marketing, not like initially at the olden time that was not the case.
So a lot of things, example, there are things which you need to, plan and finalize and come at a single point. So I think then there's a resistance, there's a change, there's a resistance to change. Again, the same point. There are some, in terms of operational things, we want to get it done, utilizing, all the data in computers or whatever, then doing about handmade thing. Then it's like, no, for example, if I want to get bill made totally without any usage of any physical copies, my father might come and say, no, we need physical copies. Where are physical copies? A bit of data might, get deleted, unknowingly, that whether it's cloud or not. Yeah. You need that there should be some physical presence. So a lot of examples in terms of accountancy is then an operational thing which you need to come to a platter. Then obviously one of the major factors is emotional pressure, I think. It's a big challenge. I mean, it's both ways. See, emotional pressure from within the family to take on the reins of your previous members the way they have been doing, because you have to carry a big name on the shoulders. Also from the consumer point of view, customers might want to, get the same experience which they have been getting from your father or, from your forefathers. To maintain that is also, I think, a big challenge. That's the emotional connect which you need to mother. So yeah, I think these are the points which I just thought. And I think there's no end to it. Yeah. मेन एक्चुअली क्या है कि अब आप ये देखो कि जब भी जनरेशन, अगर आपको लेगेसी आगे बढ़ानी है तो आपको लेगेसी बढ़ाने के लिए आपको सबकी सुननी पड़ती है। मीन्स क्या है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये भी देखना है कि नए ट्रेंड के पुराने कंसेप्ट लेके चलना पड़ता है। कई बार हम लोग के इश्यूज होते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए या वो करना चाहिए, बट हम लोग जब बैठते हैं आराम से बात होती है कि नहीं, इसको सब लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं एंड आगे फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स अगर हम लोग करते हैं, जैसे कभी आर्ग्यूमेंट्स अगर बिजनेस को आगे एक्सपेंड करना है तो फिर आपको एक वैसा करना पड़ेगा, कोई ना कोई डिसीजन अच्छा निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यही ट्राई करते हैं कि मतलब कोई भी ऐसा कुछ ना हो कि हम लोग बिजनेस को आगे रन ना कर सकें। एंड सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट, जैसे आपकी लेगेसी की बात आ रही है, तो लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए एक सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होता है, कोई भी जनरेशन हो, बेस्ट पॉइंट ये कि आप जो नई जनरेशन आ रही है आप उनको ये बोलो कि आप अपनी आइडेंटिटी बना के दिखाओ। आप कस्टमर्स को डील कर रहे हो तो ये नहीं कि एक पंजाब ज्वेलर्स का नाम या आपके पापा के नाम पे लोग आ रहे हैं, आप डायरेक्ट कस्टमर्स के टच में आओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ। और जब आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हो तो एक तो आपको इंटरेस्ट होता है आपको काम करने का, एंड आप कभी भी सोशल सर्किल में मूव करोगे तो आपको कहेंगे अरे ये तो अक्षय आ गया, ये तो अक्षय है, ये तो अक्षय है पंजाब ज्वेलर्स वाले हैं। तो जब जनरेशन आगे आइडेंटिटी बनाएगी तो उनको और इंटरेस्ट आएगा काम करने का, उनके नए ग्रुप्स बनेंगे, नए कस्टमर्स बनेंगे। तो ये चीज अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो लेगेसी बहुत आगे बढ़ती है, तो उनकी अपनी एक पहचान बन जाती है। सबकी नई जनरेशन की पहचान बनाना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे करके फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बिजनेस जब उनके आगे समझते हैं वो लोग एनर्जी के साथ, नए आइडियाज के साथ, तो हमको भी काम करने का बहुत मजा आता है। मुझे भी लगता है कि हाँ अब तो और मजा आ रहा है। कभी हम लोग सोशल मीडिया में, कभी शूटिंग हो रही है, कभी रील्स बन रही हैं, कभी मीडिया में जा रहे हैं। नई जनरेशन मतलब रात को बैठते हैं, सुबह रील बन जाती है, तो एक इंटरेस्ट लेवल भी हम लोग का बढ़ता है, फिर आगे काम करने को और मजा आता है कि हाँ। तो फिर क्या होता है, आपको एक्सपेंशन में और मजा आता है, फिर आप ब्रांचेस खोलते हो, फिर आप नए नए ब्रांड्स बनाते हो, तो ये चीजें आ जाती, फिर ये चीज ज्वाइन करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एक इंटरेस्ट लेवल ही बन जाता है। Oh, that's beautiful. I love sir जब आपने वो बताया कि it's important for the younger generation to build their own face value, to be able to move around in circuits and be known by their own identity, to be able to stand on their own feet and continue that legacy and build on that legacy. And Akshay, you spoke beautifully about the emotional quotient, that how that acts as an advantage. It's a duty and a responsibility, but also you have that support system around you in a family run business. Sir, Sanjay sir, मुझे आपसे ये पूछना था कि now there are a lot of alumni who are listening in. Not everyone is from a gem and jewelry industry background, and in fact this video will also be published online later, and there will be many people who will be watching this to know कि भाई ये gem and jewelry industry में enter कैसे करें, और enter कर भी दे तो how do we build successful brands? So what is your advice to them, especially for people who are not from the gem and jewelry industry background? पहले तो फर्स्ट तो ज्वेलर अगर वो बन जाते हैं तो उससे तो कोई अच्छी बात ही नहीं है। ज्वेलर बनना तो बेस्ट है, तो सबको तो एडवाइस हम ये करेंगे जो ज्वेलर बन सकते हैं तो वो ज्वेलर ट्राई करें एंड बने, बेस्ट ज्वेलर बन के दिखाएं। सेकंड मेन पॉइंट, आप ये देखो कोई भी स्टार्ट बिजनेस करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए, आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको काम करना है। अगर आप कोई भी बिजनेस, आप ज्वेलरी बिजनेस में आओगे तो बिजनेस मीन्स ये नहीं कि आपने एक ज्वेलर बन गए
आपका विजन होगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। एंड आप ये मान के चलो कि कहते हैं ना कि बिल्डिंग अ लास्टिंग ज्वेलरी बिजनेस इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। आप मैराथन कर रहे हो, आप एक वो नहीं कि आप दौड़े और आपने बंद किया काम। अगर आपको लॉन्ग विजन देखना है तो जितने भी आपके ये जो शॉर्ट लिव जो ट्रेंड्स आपके चल रहे हैं, आपको वो फॉलो नहीं कर सकते आप। आपको अगर आपको लॉन्ग विजन के लिए आपको देखना है, आपको फोकस करना पड़ेगा आपको कि मेरे जो कस्टमर्स, लॉयल कस्टमर्स बेस आपको ढूंढना पड़ेगा। एंड सबसे पहले आपको एक सस्टेन ग्रोथ आपको देखनी पड़ेगी। उसके हिसाब से अगर आप काम करते हो तो आप बहुत ग्रो करोगे। पर अगर आप जैसे एक होता है ना फ्लीटिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं कि आपने ये वो कर दिया तो हम ये कर दें, तो वो आपके एक फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। सेकेंड, आप ये मान के चलो कि आपको एक स्किल्स, आपके अंदर जितनी भी प्रॉपर स्किल्स होती हैं, जितने आपके ये जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो बेस्ट क्राफ्ट्समैन है, जितने भी मतलब, तो उनको आपको उनके टच में रहना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे बनाते हैं। आपको ये नहीं कि आपने बोला कि आप बन गया, तो आपको एक स्किल, आपको सब प्रॉपर वे में एक स्किल आपको आनी चाहिए किसी भी, मतलब कोई भी। वैसे तो ज्वेलरी बिजनेस की बात ही हम लोग कर रहे हैं, तो हम ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको एक कहते हैं ना सीजन्ड क्राफ्ट्समैन के साथ टच में रहना चाहिए आपको। उसके बाद आपको प्रॉपर नॉलेज, जैसे प्रॉपर नॉलेज मीन्स कि जैसे आप जेम्स में जाते हैं, जैसे अक्षय ने जीआईए किया, एंड आप ये मान के चलो कि जीआईए करने के बाद हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। हम सर्टिफिकेट्स ले के लगाते हैं, और कोई भी कस्टमर जब दुकान में आता है एंड वो जब देखता है जीआईए सर्टिफिकेट है, तो हमको कोई एग्जाम्पल देना ही नहीं है। तो वो क्वेश्चंस भी नहीं करता डायमंड के बारे में या कलर स्टोन्स के बारे में कि हमें कैसे मालूम चलेगा। तो एडवांटेजेस ये हैं कि आप कोई भी कोर्स करते हो, आप प्रॉपर कोर्स के साथ, प्रॉपर आप चाहे उसको एक ऐसे एमबीए या आप डायमंड के ज्वेलर बन रहे हो, तो आपको प्रॉपर कोर्सेज के साथ आपको आना पड़ेगा, प्रॉपर नॉलेज के साथ, चाहे वो जेम स्टोन्स है या वो सिल्वर की नॉलेज है या गोल्ड की नॉलेज है। तो आप प्रॉपर वे में उसको लो, और प्रॉपर वे में आप नॉलेज करने के बाद फिर आप उसको स्टार्ट करो बिजनेस को ज्वेलर बनने के लिए। थर्ड, आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो सबसे मेन रोल होता है आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपको ट्रस्ट डेवलप करना है। ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आपको जो है, आपको क्वांटिटी पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। आप अगर अच्छी क्वालिटी देते हो, किसी भी कस्टमर्स को देना स्टार्ट करोगे, आप कोई भी चीज करते हो, तो वो क्वालिटी से आपका मतलब बिजनेस स्टार्ट होता है। एंड धीरे धीरे धीरे, जैसे भी मैंने आपको बोला कि आपको आगे बढ़ना है, ग्रोथ, आपको लॉन्ग टाइम विजन होता है। एक ज्वेलर बनना इतना ईजी नहीं। मेरे को 140 ईयर्स हो गए, मेरी जनरेशन को 140 ईयर्स के ऊपर हो गया, और आप ये देखो कितने ईयर्स, कितनी मेहनत, कितने सेक्रीफाइसेस, कितनी ड्यूटीज। एक ज्वेलर बनना इजी नहीं है, आपको कुछ बहुत मतलब सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। कई बार आप रात को घर पहुंचते हो, आप 10 बजे घर पहुंच रहे हो, लोग वेट कर रहे होते हैं, तो आपको, लेकिन नहीं, क्योंकि कस्टमर्स हैं। कई बार हम लोग के लंच स्किप्स होते हैं, हम लोग लंच नहीं, तीनों हम हैं और दोनों बेटे साथ में, फिर भी लंच नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ड्यूटी फर्स्ट। तो ये जब जनरेशन देखती है कि आपको हार्डवर्क करना है, तब उस हार्डवर्क से आप एक ज्वेलर बन सकते हो। ज्वेलर मीन्स ये नहीं कि आपने पैसा लिया, सोना खरीदा और बेच दिया। आपको सारी चीजें करनी पड़ती हैं। फिर आपको बेस्ट, आपको मतलब तब जाके बेस्ट ज्वेलर बन सकते हो, आप बेस्ट काम कर सकते हो जब आपको ये सब चीजें आपके साथ जुड़ेंगी। मतलब आपको ट्रस्ट डेवलप करना है, आपको मतलब क्वालिटी ऐसी आपको देनी है कि लोग बार बार आपके पास आए। और लास्ट एक कंसेप्ट होता है कि जैसे आप कोई भी ब्रांड खोलते हो या आप कोई ब्रांड बनाते हो, आप कहाँ पे खोल रहे हो, वो आपके लिए सबसे बड़ा एक पॉइंट है। आप ठीक है, आप ज्वेलर बनने जा रहे हो, आपने कहा मेरा एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया, पर वहां की आपको एक क्राफ्ट्समैनशिप की वहां पे चल क्या रहा है, वहां पे किस प्राइस रेंज में आपको सामान रखना है, आपको डिजाइन कैसे रखने हैं। ये नहीं कि आपने एक एरिया पर्टिकुलर में वो चीज रख दी जो वहां बिक नहीं रही है। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत जरूरी है। तो ये 6-7 पॉइंट्स जो आपके ये जो आते हैं ना, फिर एक पैशन होता है, सबसे बड़ी बात है पैशन। जो पैशन अगर आपके अंदर नहीं काम करने का है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पर ज्वेलर बनने के लिए तो आपको इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि कोई लिमिट ही, बात करने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितने पॉइंट्स करते हो ना, कि डिजाइनिंग का पार्ट, ये पार्ट, कलर स्टोन्स का पार्ट, तो बहुत बहुत वेराइटीज हैं ज्वेलर बनने के लिए। तो अगर एक आदमी प्रॉपर ज्वेलर बनना चाहता है तो उसको इतना मजा आएगा, लेकिन प्रॉपर कोर्सेज एंड प्रॉपर एजुकेशन के साथ आप स्टार्ट करें, तब आपको मजा आएगा। क्योंकि लेगेसी में तो आपको एक तरीके से 50% काम तो आपका हो गया ऑलरेडी। 50% एम्प्लॉयज भी आपने देख लिया, आपने वो भी कर लिया, आप एजुकेशन करके आए, आपका ट्रेंड चल रहा है, आप उसको एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हो। पर नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत पेन्स लेनी पड़ती है। कहते हैं ना, नो प्रेशर नो डायमंड। एब्सोल्युटली। तो आप ये मान कर चलो कि अगर आपको डायमंड बनना है तो आपको प्रेशर में ही करना पड़ेगा, तो प्रेशर से ही डायमंड बनता है। ब्यूटीफुल। बस, तो ये बातें मेरी जो है ना, वो मैं सारी जनरेशन को बोलूंगा कि खूब हार्डवर्क करें, अपना एक क्वालिटी मेंटेन करें, ट्रेस डेवलप करें, और पैसे के पीछे ना भागे। पैसा अपने आप आता है, पर क्वालिटी के पीछे भागे जो आपकी लॉन्ग रन में चलेगी। I don't have words to say anything because I literally have goosebumps with the kinds of
with the kind of advice that you gave, sir. Thank you. And I'm sure नहीं, there'll be a lot of people who will be listening in and will be certainly inspired right. by everything that you said. And this is valuable, golden advice. Yeah. Thank you. One thing which I specifically want to point out, sir, and this is something that generally does not get talked about enough, which is the pains and the sacrifices that you have to go through. Yeah. And thank you for highlighting that. I think because the gem and jewelry industry, or at least a part of it, is sort of in the glitz and glamour of everything. Not many people, understand the sacrifices and the pain, and all of this is worth it if you have the passion for it, and if you are ready to put in all the hard work. Uh, so before I ask the next question, we did a little bit of research on Punjab Jewellers and Sons, and I want to share those things that we've put together. Arjun, if I may please request you to allow screen sharing for me, please. Thank you. Just give me 1 second. Sorry, please bear with me. All right. So these are some things I think you spoke about, both of you, and sir, you specifically spoke about the inception. I think that just talk us through a little bit of what you see on screen. I think this is the Lahore ka. Yeah, this is the bazaar in which यहाँ पे शॉप हम लोग की थी, शॉप इसी एरिया में, मतलब हम लोग की शॉप थी पहले लाहौर में. एंड ये जेम्स का मेन जेम्स का काम था, मेन कलर स्टोन्स, पुखराज, नीलम, डायमंड्स एंड ज्वेलरी भी, मतलब बाद में ज्वेलरी भी स्टार्ट हुई थी, पर मेन जेम्स का काम था, स्टार्ट हुआ था जेम्स से हम लोग का. जी. एंड ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये मेरे हैं आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, या मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मींस नथुमल जी यही थे, इन्हीं के नाम से शॉप्स खुली थी बाद में, नथुमल एंड सन्स. ब्यूटीफुल. हम लोग की हाँ, या ये मेरे ग्रैंडफादर के फादर मींस ग्रेट ग्रैंडफादर नथुमल जी. ब्यूटीफुल. एंड ये हमारी पुरानी शॉप, या दिस इज द, ये पहले की शॉप 1980s में जब ये बनी थी, पंजाब ज्वेलर्स, नहीं सॉरी 50s, 1950s में, 50s में था. तो ये एक रेंटेड शॉप हमारी है पंजाब ज्वेलर्स की. वाओ. या इसका थोड़ा बैनर, ये दुकान है, ये पुराना ओल्ड पिक्चर. This is the rented one. This is the rented one. This is the rented one. So this is the first shop which my grandfather opened. Beautiful. Grandfather, in Lucknow in 1949 and 1950. Right after the partition and everything. After the partition and first, yeah. I know we spoke about this earlier, and Sanjay ji, आपने भी बताया कि when you started when you were about 17, 18. Yeah. सेकेंड ईयर अपना कंप्लीट कर ही रहे थे, एंड बस फैमिली बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि यू गेट इन अर्ली एज यू कैन, एंड तब आप दुकान पे कंट्रीब्यूट करते थे. सो एंड दैट्स समथिंग दैट आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट कि why do you think it's important, or first of all, is it important according to you for especially the younger generation to get that work experience, and not specifically in the family business that they have to take over, but it could just be about getting that industry exposure, working somewhere else. Is that something that you consider important from your perspective? And if that's the case, then Akshay, I would want to ask you, how has that experience been for you? Is that something that you had to undergo? Sir के कुछ requirements थे कि भाई ये complete कर लो पहले, फिर family business join करना. Please tell us about it. Yeah, I think so. I'll tell about my experience, right? Because I've had an experience, so I can tell you exactly how can that help directly. So after my post graduation, I worked for a year over here in the store, and then I went to do my GIA, right? And then after my GIA, I worked for some time in a diamond rough manufacturing company. I mean, the polished diamond, from the rough they manufacture polished diamond. I worked there for some time, and then I started grading also with them. That was my time during Bombay only. When I was in Bombay after my GIA course, I worked for some time, one of the most prominent companies, like one of the site holders companies, and there I worked as a grader. So it was a very enjoyable journey. Sitting with the people, grading stones,
And in terms of the market, the way GIA teaches us, segregating is different, but the way market has to segregate the stones is different. So to understand the market way of segregating qualities is something which I learned over there, the first hand experience which I had. So then GIA has a lot of, GIA teaches us using solitaires, right? But if we talk about -2, smaller stones. So, pick the smaller stones with a tweezer. So now that has to have an experience. It's very small thing, but something which is very important in the future in a trade or business. So I learned there. Then seeing the quality of smaller stones. So and identifying the different colors with minute differences without the we call the sample stones which you have like in GIA to identify, but like identify without those. So that's something which I learned from experience, which I had. Then I worked with one of the bigger organized players like in India as a normal employee. So I really loved the experience. As a normal employee, I worked there in one of the prominent stores in Bombay, only in Bandra. So I worked there for 7-8 months, and there I learned the way you are being taught the kind of pressure you have as an employee, first of all, which you also have to go forward because you'll also have employees in the future. So then the pressure we have, the skills which you develop, because there you don't have any capacity of your family being there to surround you, to guide you. If you do mistakes, then they are there to support you, but not the case over there. If you do make some mistakes, then you are on your own, right? So then it helps you develop your I think the skill develops over there in terms of directly dealing with the customers, or having the knowledge, first-hand knowledge of the world, dealing with different kind of clientele altogether, which you normally don't serve. Then the experiences which you have teaches you also in terms of how can you make it better. The confidence which you get, the confidence, the credibility which you have. Even a customer comes to you if they know that you work somewhere apart from your father's business, then they will feel that they're you're more credible to them, because then they know that you have also you're not there just because you're a son of their family or whatever. You are also there because you have some knowledge of the trade, first-hand knowledge of the trade, apart from the formal education which you have. So then the credibility of the customer also increases, the confidence in them also increases. Then obviously you're independent now because you have worked somewhere that you know how to handle things on your own, right? So if there are some challenges which you might be facing, then you can handle them better. And then obviously there's networking. I mean, you work somewhere, then you get some networks, make a new people, several friends. Now, if I want to source something, for example, if I have been in my business without them, so I might have the contact which I already had, right? Or if I get them in an exhibition. But then if I work somewhere, I have inner knowledge of the contact which I have, which you don't normally find, right? So then networking also helps. So I mean, skills development, getting more confident in the trade, the perspective of managing things on your own. A lot of things are there. Customer confidence. So all of things are very important. I think that's why one should obviously try, if possible for them, to work somewhere in any kind of business in this industry, whatever kind of business. But if you want to do in this industry, then you have to work somewhere in this industry only. Maybe a retailer, maybe a wholesaler, maybe a manufacturer, whatever, wherever they can get the time off to utilize. But that's something is very important. That's what I've been by experience. I think it's very important. One should obviously go for it. And Sir, I wanted to get your perspective. मेरा तो ये मतलब है कि जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जब काम करते थे जैसे बहुत ईयर्स पहले, तब तो ये कहते थे कि जैसे मैंने बोला मैं 17 ईयर्स में बैठ गया, तो तब जो बड़े होते थे मेरे फादर थे, वो क्या करते थे, वो कहते थे जैसे मैं 70 में पढ़ रहा हूँ, बीएससी कर रहा था, एंड ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने पढ़ा तो क्या करते थे, वो कहते थे आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तू दुकान चला जा। वो एक्चुअली मेरे एक और ब्रदर थे, तो जब बड़े बैठाते थे तो उनको एक कुछ ना कुछ वही बहाने चाहिए होते थे कि कैसे हमको बैठाना है। तो वो क्या करते थे, किसी ना किसी बहाने कहते आज मैं 2 बजे जाऊंगा, तुम एक काम करो, वो दूसरा जो मेरे बड़े ब्रदर है ना, कहते वो अकेला है, तुम जाके उसको ज्वाइन कर दो। तो मैं 2 क्लास करता था और दुकान चला जाता था। ये अभी रिसेंटली पता, ये 85-86 की बहुत पुरानी बात भी नहीं, 85-86 की बात है। तो पहले क्या करते थे, जितने भी पेरेंट्स थे उनको बच्चों को 17, 18, 19 ईयर्स में बैठाना ही होता था कि इनको बैठा दो, ये बिगड़ेंगे नहीं, ये अपने बिजनेस संभालेंगे, फिर शादी 21-22 में, जैसे मेरी शादी 22 ईयर्स में होगी, फिर शादी कर दो, इसके बाद तो बिजनेस सेट, फिर तो बस जहां पैसे के उसमें पड़े या बिजनेस में आए तो फिर तो वो कहीं नहीं जाएंगे। तो ये ट्रेंड चलता था। पर अब जनरेशन चेंज हो गई है। अब अगर हम जनरेशन को बोलेंगे कि आप 22 साल में बैठ जाओ, तो वो 10 साल के बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब उनको बहुत बहुत नेसेसिटी है
आज के जनरेशन को कि प्रॉपर वे में, क्योंकि अभी जनरेशन लेगेसी में क्या हुआ, आपने एक ब्रांच खोली, आपने 2 ब्रांच खोली, पर अब जो आजकल नो लिमिट गेम है, आजकल जिस तरह के लोग बना रहे हैं उनकी चेन्स बनती हैं, आपको 50 शोरूम के हिसाब से काम करना पड़ेगा, आपको 100 शोरूम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो जब आप वो समझ के चलोगे तो आपको एक प्रॉपर एजुकेशन विद प्रॉपर गाइडेंस, वो बहुत जरूरी है। अकाउंट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, ट्रेंड के बारे में, एम्प्लॉयज के बारे में, तो आप जब हर चीज की नॉलेज लेके जब आप खोलते हो तो आपका एक होता है कि आपको विजन, लॉन्ग विजन से काम करना है, कि आपको खाली ये नहीं कि एक ब्रांच खोल के बैठ जाना है आपको। बराबर। तो ये जरूरी है कि आपके टच में सारे शोरूम्स रहेंगे, ये जरूरी है कि आप अपना एक पर्सनल कॉन्टेक्ट बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, पर ये भी जरूरी है कि आपको आगे बढ़ना तो ब्रांचेस खोलनी है, आप एक शोरूम में लिमिट नहीं रह सकते। तो उसके हिसाब से बहुत जरूरी है कि आज के जनरेशन को प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, उसके बिना कोई काम नहीं। और सबसे जो ज्वेलरी है बहुत बहुत बड़ी एक फील्ड है, जैसे लोग डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, कोर्सेज करते हैं, तब जाके प्रॉपर इतने स्टडी के बाद, तो ये नहीं है कि उनको भी अपना पूरी एजुकेशन के बाद और साथ साथ में साइड बाय साइड इनको ये नहीं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। आप पढ़ाई, आप अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप 2 घंटे का टाइम निकालो, आप जाके डायमंड का कोर्स करो, आप अकाउंट्स के बारे में सीखो। ये नहीं कि आप पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करो फिर उसके बाद आप 3 साल उसमें लगाओ, फिर तब तक तो आप हो गए बड़े, तो फिर आपका टाइम निकल गया, फिर शादी हो गई, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्रॉपर वे में आप, जैसे अक्षय भी था, जब ग्रेजुएशन करा दिया, उसने ग्रेजुएशन किया दिल्ली से, साइड बाय साइड अकाउंट से काम, टैली कराया, वो कराया। जो मेरा छोटा सन है मेरा, वो जैन कॉलेज से उसने एजुकेशन किया बॉम्बे से, वो जैन कॉलेज ज्वाइन करता था एंड शाम को IGI की क्लासेस करता था वो जाके, उसके बाद अकाउंट्स करता था। उसने टाइम नहीं वेस्ट किया, उसने ग्रेजुएशन के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इसने भी ग्रेजुएशन का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो आप, अगर आपको ज्वेलर बनना है तो आपको ये स्टार्टिंग से करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं आगे, मतलब उनको कराने के लिए। तो एजुकेशन, मतलब प्रॉपर एजुकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, और टाइमली ये नहीं कि आप एक साल वेस्ट करके, नहीं, आपको टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं है आज के टाइम पे। आप ये मान के चलो, आपको हर मिनट, तब आप जाके बेस्ट ज्वेलर बनोगे। और अर्ली एज में आपको एक बना के देखना, जैसे मेरे फादर थे, मेरे फादर जब ये अक्षय पढ़ रहा था वहां पे रामजस कॉलेज में, तो मेरे फादर ने बोला, अक्षय को एक वर्ड बोला था जब ये कॉलेज में, कि तुमको बेस्ट ज्वेलर बन के दिखाना है। ये मेरे फादर ने बोला था अक्षय को, और वो ये बात है 19, मेरे ख्याल से ये 1998 97, जो भी, जब 2007-8 की बात थी, जब ये ग्रेजुएशन करने आ रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक पैशन आप डेवलप करोगे, मतलब एक तरीके से आप डेडिकेशन अपना दिखाओगे, और आप प्रॉपर वे में स्टार्टिंग से आप बन के दिखाओगे कि मुझे एक बेस्ट ज्वेलर बन के दिखाना है, तो फिर आप काम कर सकते हो। बिल्कुल। लेगेसी में बैठने के साथ साथ भी आपको सारी, अगर लेगेसी में तो भी आप करो, बिना लेगेसी, जैसे अब नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, नए बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको एक्सपेंड करने के लिए एक्सपोजर करना ही पड़ेगा। प्रॉपर एक्सपोजर, पूरा वर्ल्ड घूमे, अगर जा सकते हैं तो वर्ल्ड घूमे, दुकानें देखें लोग कैसे काम कर रहे हैं, ब्रांचेस खुल रही हैं, तो ये जैसे अब ये बड़े बड़े 100 ब्रांच बनती है, कैसे बन रही हैं, उनको मैनेज कौन करता है, तो ये सब उनको पहले अर्ली ट्रेनिंग लेनी है, फिर जाके वो अपने को, फिर उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा, फिर वो अपना आगे एक्सपेंड करें, एक शोरूम से 2 बनाए या ना बनाए तो प्रॉपर वे में काम करें, ऑर्गेनाइज काम करें। पहले तो होता था वो अकाउंट, वो मैनुअल, एक किताब होती थी उसमें अकाउंट्स बन गए, बिल बन गए, मैनुअल, वो टाइम, हम लोग ने जो टाइम देखे हैं वो बहुत अच्छे टाइम थे तो उसमें। लेकिन अब तो कंप्यूटर जमाना, अब तो आप सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए, आपको खाली आपको दिमाग लगाना है, आपको ब्रेन यूज करना है, और आप ज्वेलर कुछ भी कर सकते हो, आपको लोगों को हायर करना है। तो ये सब चीजें टेक्नोलॉजी ने, तो आप सोचो आज की जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत हाई लेवल में, आपको कुछ सोचना ही नहीं। हम लोग के टाइम में तो आप सोचो मोबाइल फोन ही नहीं होते थे, एक फोन होता था घर पे, जो कि हमारे ग्रैंडफादर लॉक रखते थे, और किसी की हिम्मत नहीं होती कि घंटी भी बजा फोन कर सके। तो टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई, अब तो आदमी सोच ही नहीं सकता कुछ। तो इतना अच्छे टाइम पे लोग, जो आज नई जनरेशन, उनको इतने एडवांटेजेस मिल रहे हैं बिजनेस के लिए कि उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए। आप ई कॉमर्स में जाते हो तो आप ग्लोबल टच में आ जाते हो, आप पूरे वर्ल्ड के टच में हो। ये नहीं है कि आप एक अपनी दुकान, तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक दुकान में सामान बेचो, आप ई कॉमर्स से आप उसको ऑनलाइन बेचो, आप ग्लोबल टच में सबके साथ आओ, तो अब तो बहुत फैसिलिटीज हैं। तो ये सब को करते हुए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। नई जनरेशन को तो खूब ज्वेलर बन के दिखाना चाहिए। प्रॉपर GIA जाए, देखिए GIA में आप ये सोचो, जेम स्टोन्स के बारे में दिखाया, जब इसको सिखाया अक्षय को, एक इसने वन ईयर का कोर्स किया, इसने डायमंड ग्रेजुएट बना, इसने जेम्स का ग्रेजुएशन बना। उसके बाद आप ये सोचो कि दुकान में जो मेरे पास लूज डायमंड के पैकेट्स पड़े होते थे, जो मैं यूज नहीं कर पाता था, मेरे पास इतने लूज डायमंड्स होते थे कि मुझे लगता मैं क्या करूं,
कि भाई एक एक डायमंड को उठाना को ईजी नहीं है। पर जब से ये आया अब होता है कि अपनी ज्वेलरी हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, लोकल जितने हमारे जितने भी कस्टमर्स लोकल हैं, अब उनको एक ऑर्डर बनाना है जो हमको परसों देना है, तो ये हम बॉम्बे के या किसी के हम लोग वो नहीं कर सकते। हम लोग के लोकल कारीगर से फटाफट डायमंड्स दिए, डायमंड बाय करना सीख गए, ये भी पता हो गया असली कौन सा नकली कौन सा है। नहीं तो एक टाइम होता था आप कैसे कैसे कर सकते हो, आपके पास नहीं होता था। तो ये प्रॉपर कोर्सेज जीआईए जैसे कोर्सेज डायमंड के बारे में, कलर स्टोन्स के बारे में, तो आप प्रॉपर जब बैठते हो तो फिर आपको लगता है कि आप एक अच्छे ज्वेलर बने। आप मतलब ग्रेडिंग हो गई आपकी। जैसे बिल्कुल। आप जैसे मेडिकल कॉलेज से आप जब पढ़ के आते हो तो लोग कहते हैं ये तो मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आया है। तो जीआईए से अगर आप डायमंड के बारे में, कलर स्टोन के बारे में एक डिग्री ऐसी मिल जाती है कि हर आदमी एक रिलायबल, चाहे ऑनलाइन हो, आपको ढूंढेगा कि आप जेमोलॉजिस्ट हो और या आप दुकान में भी बेचो। तो हम जब सर्टिफिकेट जीआईए का सॉल्टर का देते हैं तो एक सबको लगता है ये जेन्युइन पीस यही है। तो ये चीजें सबको एक एजुकेशन के साथ सारे बच्चों को, सब जनरेशन को आगे बढ़ना चाहिए। और अक्षय लोग ने ज्वाइन किया, आदित्य ने ज्वाइन किया, मेरे दोनों ने ज्वाइन किया, प्रॉपर एजुकेशन के साथ है। इसने वॉरिक से एमबीए बाद में किया, तो एक वहां का इंप्रेशन, वहां के लोग जैसे डील करते हैं, आज ये सबसे बात करता है, कहता है यस मैम यस मैम। मतलब एक एजुकेशन, एक स्टाइल, एक रिस्पेक्ट देना, तो ये चीजें बहुत काउंट करती है। ये मतलब एक बिजनेस तो अलग है, ज्वेलर बनना तो बहुत, कहते हैं ना कि भगवान सबको चूज करके कोई ना कोई एक चीज देता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो हम्म। ज्वेलर जिसको बनाया होगा वो किस्मत वाला ही होगा जो ज्वेलर बना होगा। हमारी किस्मत भी ऐसी है सर, हम भी ये हाँ इंडस्ट्री में, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वी गेट टू टॉक टू मोर फॉर्चुनेट एंड अमेजिंग पीपल लाइक हाँ। यू लेकिन आप बस एक सर। चीज। I, हाँ I I was completely mesmerized with the way that he spoke about the changing times, how a different technology was before and what it is today, and certainly that is an evolution that he can speak about. Uh, He has this energy that he wants, to share the knowledge whatever he has, whatever he can, at whatever extent he can share the knowledge. Absolutely, and that's beautiful, right? I mean, uh, and the fact that he has so much passion and as well as advice for the younger generation. Speaking of, we spoke about how you all these years, all these decades, you build these amazing, relationships with your clientele. Uh, I wanted you to sort of reflect on some of these stories from with different customers. I know there could have been plenty in the entire library, but maybe if you could talk a bit about maybe one or two. Actually, you could talk about a customer story, and then sir, you could also talk about one मैं पहले customer. शेयर करता हूँ एक स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करता हूँ मैं। जी सर, बोलिए ना। हाँ स्टोरी ये मतलब वैसे तो कस्टमर्स तो इतने ईयर्स में तो कितने कस्टमर्स आते हैं, कितने डीलिंग्स होती हैं, खूब मजे आते हैं, खूब बातें करते हैं, फैमिलीज के बारे में करते हैं, पार्टीज के बारे में बात होती है, सामान तो बिकता है। लेकिन आप जब उनकी फैमिली के टच में आते हो तो एक आपको एक डिफरेंट स्टोरी सबकी बन जाती है। जब मैं आज मतलब 20 ईयर्स बैक होगा, तो क्योंकि सारी जनरेशन को मैं एक एडवाइस ये देता हूँ कि कोशिश करके पर्सनल टच से काम करो। स्टाफ तो है पर आप पर्सनल टच जरूर दो अपना, मतलब आप स्टाफ काम करा करो, अगर आप पर्सनली नहीं कर सकते हो तो आप टच में रहो। मेरी पुरानी दुकान जो मैंने आपको दिखाई है वहां पे एक ऐसे ही कस्टमर, रैंडमली एक लेडी आई थी, तो उसने मतलब जैसे डीलिंग होता है, एक भाई तब पुरानी दुकान में भीड़ ज्यादा होती थी, एरियाज कम होते थे, ज्वेलर कम होते थे, तो तब क्राउड ज्यादा होता था, बहुत भीड़ होती थी। तो एक लेडी आई कि उसको कोई ज्वेलरी बाय करनी है, तो उसने बोला कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा है, एक दो चेंज जो भी चीज, एक ज्वेलरी लेनी है, मुझे बाय करनी है, मुझे एक ये बनाना है, लेकिन मेरे पास टाइम 1-2 दिन का जैसे भी है। हमने कहा ठीक है। तो स्टाफ डील करा था, तो मैं सामने आ गया, क्योंकि हम लोग की शुरू से हैबिट है कि खुद डायरेक्ट डील करने के। मेरे फादर ने भी वही किया, मेरे ब्रदर ने भी किया, अक्षर भी करते, तो मैंने डायरेक्ट डीलिंग मैंने स्टार्ट की, उसकी डीलिंग करने। तो तब मुझे लगा कौन है क्या है, कहते मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कोई एक किसी के लिए चाहिए, वो किसी होटल में स्टे कर रहे हैं, तो वहां पे डिजाइन दिखाने होंगे। तो हमने ज्वेलरी पसंद करा दी, उन्होंने बोला कि मुझे 2 दिन या 1 दिन में चाहिए, तो हमने कहा ठीक है चलो ठीक है। पर क्योंकि एक होता है ना कि आप ज्वेलरी लेके किसी जगह जा रहे हो तो कौन कैसा है ये तो पता नहीं चलता ना। तो अब थोड़ा सा तो पापा भी थे तब, हम लोग के और भी थे, तो हमने पापा से बात की, तो तब ये लगता था पता नहीं कौन है, नोन तो है नहीं, अननोन है। एंड उसके बाद हम लोग 1-2 स्टाफ लेके मैं खुद चला गया डायरेक्ट उस होटल में। एंड वहां पे वो उसने, मैंने पूछा उनसे, होटल वाले से, कोई यहाँ पे स्टे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो एक मतलब एक मालूम करने के लिए क्या ये मतलब ये रियलिटी है कि ये मतलब ये जो लेडी आई है, तो उसने बोला कि मैं मैनेजर उनकी हूँ, ये हूँ। तो बात हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ऊपर कमरे में जो स्वीट है उस कमरे में वो हैं, उनको दिखाना है, ये चीज बननी है, तो आप उनसे मिल लो। तो मैंने स्टाफ के साथ जाने का, तो कहते नहीं स्टाफ नहीं जाएगा, आपको अकेले बुलाया है। अब फिर मैंने सोचा कि स्टाफ को भी मना कर दिया, और लेकिन क्योंकि वो एक 5 स्टार होटल था, एक स्टार होटल था, तो वो
थोड़ा बहुत था कि वहां पे कोई ऐसा फेक आदमी नहीं आएगा, मतलब ऐसे कोई नहीं होगा, लेकिन एक अंदर हो रहा था कौन है ये, कौन है। फिर एक एक्साइटमेंट भी था। और तब मैं 20-25 साल पहले एक यंग था और मजा आता था बात करने का, एक एक्साइटमेंट होता था लोगों से मिलने का कि कौन है ऐसा, कौन है सेलिब्रिटी, देखे तो सेलिब्रिटी कौन है। तो फिर वो कमरे में 6 से 7 फ्लोर में मैं कमरे में गया, तो वो साथ में मैनेजर गई, तो उसने मुझे नॉक ना करके अंदर भेज दिया। तो अंदर देखा तो आप ये सोचो कि कौन था, आप ये सोचो सैफ अली खान था उसमें। और सैफ अली खान तब ओमकारा पिक्चर आ रही थी, उसकी शूटिंग के लिए सैफ अली खान वहां पे, तो उसको ज्वेलरी कुछ लेनी थी, तो उसके मैनेजर ढूंढ रहे थे, कुछ भी लेना था। अब एकदम देखा तो एकदम मतलब वो लगे ये क्या हो गया, ये कहाँ आ गए। तब वो अपनी बॉडी वॉडी बना रहे थे, वो अपनी मसाज उनकी हो रही थी ओमकारा के लिए, सीन की तैयारी हो रही थी इसकी। तो फिर वहां पे गए तो हम लोगों ने, मतलब आप सोचो कि 30-40 मिनट्स 45 मिनट्स हमने उनसे बैठ के बातें की, इधर उधर की बातें, स्टार्स की बातें। ऑर्डर तो मिला ही मिला, ऑर्डर जो देना तो अब तो हमने उनको देना ही था। फिर मैंने उनसे बोला, फिर मैंने कहा कि ऐसा है कि तब ये अक्षय आदित्य मेरे ख्याल से 7-8 ईयर्स के होंगे, 9 ईयर्स के होंगे, जो भी होंगे। तो फिर मैंने इनसे बोला कि अब शूटिंग आपकी हो रही है, तो क्या अब आप यहाँ तो बातें हो रही, क्या वहां पे अलाउ करोगे हमको। तो नेक्स्ट डे उन्होंने स्पेशल नंबर दिया और हम लोग सब उनकी शूटिंग देखने गए। तो विवेक ओबराय से भी मिले, इनसे भी मिले, अजय देवगन से मिले, तो तीनों वहां पे ओमकारा की शूटिंग जो चली थी वहां पे हम लोग सबसे मिले, सबसे हेलो आई। तो मेरा ये मतलब एक्सपीरियंस इसलिए नहीं किया, मतलब आप ये देखो कि जब आप किसी बिजनेस में आप डायरेक्ट टच में रहते हो, आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करते हो, तो आप कहीं भी किसी लिमिट में आप पहुंच सकते हो। तो कांटेक्ट कैसे बनते हैं आप ये देखो। तो आप सोचो हम लोग स्टार से ऐसी कई एपिसोड्स हमारे हुए कि कई मतलब कई लोग अच्छी पुरानी फैमिलीज के कई रिलेशन ऐसे लखनऊ में जिनके स्टार्स हम लोग के बहुत अच्छे स्टार्स, उनके किसी के बेटे हैं, किसी के वो हैं, कुछ होते हैं। तो जब आप जनरेशन से और ज्वेलर्स बनते हो तो एक ज्वेलर्स वैसे भी एक उस कैटेगरी में आता है कि आप एक मतलब एक ऐसा नहीं है ज्वेलर मीन्स कि ये अच्छे ही होंगे, ये एक फैक्ट है कि हाँ ये अच्छे होंगे। तो फिर वो कॉन्टेक्ट निकलते हैं, फिर कई स्टार्स हमारी दुकान में भी आए हैं, कई ऐसे ऐसे मिलते रहते हैं। मतलब तो ये एक बहुत बड़ा एक वो सरप्राइज था कि एक उससे बड़े स्टार से मिलना, एक ज्वेलरी के बहाने से आप एक इतने स्टार से मिलते हो। तो एक क्या होता है, एक कोई भी डील आप करते हो, तो हम तो ये इन लोग अक्षर आदित्य को ये बताते हैं, कोई भी डील करो आप पर्सनल टच बनाओ। क्या पता कौन किस कैटेगरी, बात ये नहीं किससे मिलो, लेकिन आपको फिर एक मजे भी आते हैं, फिर आप एक तरीके से एक लाइफ में आप इंजॉय भी करते हो। तो ये कई बहुत ऐसे एपिसोड्स हम लोग के साथ, मेरे साथ तो बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए ना, कुछ ना कुछ मजे आते रहते हैं, कुछ ना कुछ इंजॉय करते रहते हैं हम लोग। सेल भी हो रहा है, कस्टमर्स भी हैं, बिजनेस भी हो रहा है, एंड साथ में एक्साइटमेंट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। That's a very fascinating story, sir. Thank you so much for sharing that. Akshay? I think इतनी fascinating story मेरे पास तो नहीं है. I don't have this, you know, this. It is star-studded, maybe not. Nowadays we have, but then you need to pay them. You know, that those are like they. I mean, if you know about that story, it was, you know, she surveyed all the city, but she came to our store. Maybe word of mouth was there somewhere, because obviously for celebrity, if somebody is buying something, they don't have any dearth of, you know, stores, but they have come to the store. Maybe some word of mouth played because of the relationship that they maintain with other people. Right. So I think I'll speak about one story which I recently experienced. So, as we know, these days a lot of youngsters, they don't depend on their parents much about whenever they want to buy jewelry. I mean, they want to survey their own. I mean, they want to search about, you know, whatever they think the jewelry, whatever they want to buy, they're getting the best price, they're getting the best design. They want to see a lot of options, you know. So a lot of people don't want to just depend blindly in whatever the parents want them to go and, you know, buy stuff for them. So recently, a friend of mine recommended a person that they want to buy some jewelry. So then that family, luckily, was a very old family of ours who they wanted to buy some jewelry for their wedding, and they had the engagement the very next day. I mean, you know, sometimes like next day only they're going to get the engagement done. So they didn't plan about that. So they came to the store. So the family was a very old customer of ours. Like very old customers of ours. I mean, they introduced us, and then my father knew them, and we knew them. So there were a lot of networks between us. But the younger generation was like, no, I want to buy something which is ready, and I want to look a lot of options at, and then I'll buy. So now they wanted specific, you know, platinum bands. They wanted a specific pair of platinum bands for the guy and girl both. Now you don't get to see a lot of options platinum bands. In, you know, I mean, a lot of options. I mean, you have 7, 8, 10 options, whatever, same kind of platinum band. But for, you know, right away they wanted like right away. Then that was a different story altogether, because they said we have an engagement tomorrow. So like, okay, let me experience or whatever. So then I thought, since they are old customers, then I have to maintain the contacts with them so that they don't go anywhere else. That was something, because I want to maintain that also in terms of the you know the emotional connect, because they were old customers, also because I think
in terms of the business, I think they had to buy a lot of stuff for the wedding. So that was like losing customer again, for a big customer for the wedding jewelry business. So then we somehow managed to find a design, and then I got this platinum ring made in 5 to 6 hours, but not in Lucknow, because you don't have a facility in Lucknow to get platinum ring made before of that. That was made somewhere in South India. Now the next day they had this engagement. So any courier, they don't deliver in the same day from South Delhi to Lucknow. They take a day's time. So now the next day was made. So made a point to send some of my two of my staff people to like by through a flight directly there. They took the stuff and they got the same in an hour's time to us. I mean, the cost involved was as far as the cost I was giving them. So like there was no profit at all in the deal. But then the customer was so satisfied with us. They were so happy with the satisfaction, the delivery timing and the finish and everything, that I mean, I thought the most of the job which I thought was done, and now they obviously come back for a wedding shoot, and they came back to the wedding shoot to buy that, and everything is maintained. I mean, there was just going off the scene just to make a little extra effort, not thinking about sometimes about not so much the profit is involved everywhere, just to maintain the relations and to maintain that if somebody is coming, they don't go without buying. They should not go empty-handed. We tried to make an effort and we closed that. I mean, that was something I had a very good night's sleep. I think that is something which I think going forward I would always remember. Very beautiful and very fascinating. I think this itself could be a very beautiful case study on customer satisfaction. As to one, you're not making any sort of profits, but you've gone out of your way to sort of get that wedding bands, platinum that again was value. and I think that's the values which you've got, like my forefathers. That's again speaks about the cultural values, I would say. Not missing a customer and maintaining whatever they want to buy at any cost. Absolutely. And the fact that you made it available to them for a very important day in their lives, Yes. I think that itself is incredible. And as jewelers, I think that is one of the most fascinating things that you get to experience, is that all the jewelry purchases are linked to these very emotional, very important, significant days. Whether it's a wedding, whether it's an engagement, whether it's the birth of a child. Beautiful. I want to move on to my one last question to both of you. And this is generally a question that I ask almost to every speaker who's here on Legacy of Leadership, which is, what is your favorite gemstone and why? I think Dad will answer it well. Yeah, favorite gemstones. So, I mean, diamond is the favorite gemstones because diamonds are forever. एंड क्या कहते हैं, गर्ल्स के बेस्ट फ्रेंड इज डायमंड. फिर थर्ड वो जो भी पहले बोला था, नो प्रेशर नो डायमंड. तो डायमंड्स तो ज्वेलरी एक्चुअली एक डायमंड ही ऐसी ज्वेलरी की जेमस्टोन है जो कि एक रेयर हो गया. रेयर होने के बाद क्या होता है, जब आप कोई ज्वेलरी पहनते, कोई फैमिलीज, कोई आप एंगेजमेंट्स करोगे तो आप देखो डायमंड्स बेस्ट होते हैं. आप कोई भी कॉकटेल पार्टीज या पार्टीज में अगर आप कोई भी ज्वेलरी अगर आप देखते हो, जो भी कोई भी फैमिलीज लेंगी, तो वो डायमंड से जो रिचनेस आती है वो किसी भी चीज में नहीं आती है. हाँ, मे बी आप डायमंड के साथ कुछ ऐड कर सकते हो, आप रूबी ऐड कर सकते हो, आप ब्लू स्टोन्स कर सकते हो, आप ग्रीन स्टोन्स कर सकते हो, वो थोड़ा सा आप स्टोन ऐड करते हो, पर विदाउट डायमंड्स कोई ज्वेलरी की ग्रेस नहीं. एंड वो भी नेचुरल डायमंड्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि उसकी रीसेल भी आपको मिल रही है. आप कोई भी चीज एज ए इन्वेस्टमेंट भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये नहीं है कि आपका, ठीक है, आपको रीसेल में बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है या नहीं मिलता जरूर है, पर ये नहीं कि आपका लॉस होता है. तो क्या हो गया, डायमंड्स के साथ एक ज्वेलरी मतलब एक डिफरेंट एक एलिगेंस आ जाती है, एक पूरी फैमिलीज में एलिगेंस आती है. और आप एक गोल्ड भी देते हो साथ में, एक डायमंड भी देते हो, तो फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि डेली कोई भी एक गर्ल देख लो जो वर्किंग गर्ल है, जो आजकल जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो आप देखो जो डायमंड्स, जो छोटे इयरिंग्स पहनेंगे तो डायमंड के सूट करते हैं, गोल्ड कोई नहीं पहन सकता. तो डायमंड्स पहनने से एक ग्रेस भी आती है, एक आप पहन लेते हो, एक रिचनेस आती है कि आपको लगता है कि मैंने एक पैसा में, आप देखो ना, वर्थ फॉर मनी. आप देखो ना, जैसे आप कोई पैसा देते हो, आपने कहा 50,000 रुपए का मुझे कोई सामान लेना है ज्वेलरी में, तो आप बाद में क्या, आप प्राउडली सबको बोलते हो मैंने डायमंड बाई किया, मैंने डायमंड ज्वेलरी ली है. वो डायमंड्स का एक स्टेटस अलग है. और हम लोग काम डायमंड्स का एक हम लोग का मेन होता है कि मेन हम लोग डायमंड में ही मतलब डील करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि कलर स्टोन्स भी होते हैं, लेकिन डायमंड तो डायमंड्स है, तो कोई कंपैरिजन डायमंड्स का तो नहीं.
सारे वो पॉइंट्स आपका है, सब पॉइंट्स है। वो आपका एक थोड़ा सा फर्स्ट लव भी है, आई थिंक, फर्स्ट बिकॉज लव भी है। बिकॉज यू केम डाउन टू मुंबई, आपने यहाँ पे या बॉम्बे से, एंड उसके बाद पॉलिशिंग साथ साथ में की है, तो आई थिंक वो हाँ, भी एक आपका फर्स्ट लव है, और लगता है उसके बाद वो वन ऑफ द फर्स्ट। सबसे बड़ी बात है, जो मेरे पास दो है, दोनों सॉलिटर्स मेरे पास हैं ऑलरेडी। ये ब्यूटिफुल, डायमंड ही है, दोनों डायमंड ब्यूटिफुल, तो मेरे पास ही है। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। Diamond अक्षय, commercially, yeah, I think commercial diamond, as you mentioned, is very viable in terms of business because obviously diamond jewelry is a very good proportion of our sales. And diamond also is very durable stone. There's no issue with anybody wearing getting it. course. As a gemologist, do you have any other option, because you've been exposed Yeah, to so so many I gemstones? think personally, yeah, I think diamond is there. But if I talk about another stone, I would say is an emerald. I mean, I really like emeralds. So green color is always goes with any fashion, any trend. And if you talk about history, we talk about the ancient civilizations. Like if you talk about Cleopatra is very famous. She's famous for having emeralds, right? So emeralds have always been likable gemstone. So I like that also. Although it's not a very it's breakable. I mean, it's not as hard as a diamond. We need to take care of that. But once you put in a jewelry piece or whatever, then it's very manageable. The color is there. That I would different hues. You can obviously supply in terms of making jewelry also to consumer. So and it can go with any diamond jewelry also. Green color can go with any diamond jewelry, any kind of attire you want to wear. It's very much in fashion. So I think personally I like emeralds a lot. Beautiful, beautiful. Thank you so much. Diamonds and emeralds का combination, and एंड आपकी I जो couldn't have. एक आपकी जो बुक है जो जेमस्टोन्स के बारे में है, वो बहुत यूजफुल है, जो अक्षय लेके आया था जेमोलॉजी करने के बाद। तो मे बी क्या होता है, जब कोई कोई होता है ना, हर कस्टमर्स पूछते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं किसी जेम्स की, तो आपकी कोई बुक है जिसमें सारे जेम्स के बारे में दिया GIA की। Magnification, magnification. Big, we have a whole Bible. Everybody knows a whole Bible. So many booklets involved for each specific gemstone. Talking about that. The customer comes to us. I mean, so there's a small library I've made. Just with all the GIA books. So the customer wants to understand more about that. I just get the book and let's go see, make them see this is the property. This is the property. वो पेज खोलते हैं, हम लोग पेज खोलते हैं, उनको पूरी उसकी पिक्चर दिखाते हैं एंड सारी प्रॉपर्टीज उनको दिखाते हैं कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये। Beautiful. क्या बात है। I think customer education at the end of the day. Customer education. Yes. Great. And I think I wanted to end on that note where sir said that diamond उनकी favorite इसलिए भी है because, like I surmised, probably because first love उनकी वो है, but also because he has two amazing solitaires. And that's it. Thank you so much. On that note, certainly want to take this moment to thank both of you, Akshay and Sanjay ji, for telling us these amazing insights, for letting us know and sharing so openly. Sanjay sir, specifically you, right from talking about the inception, the moment that it happened in 1880s, 90s, from Lahore, and the journey that you've had for over 100+ years, right from that to your sons joining you in the business, as you call them, your solitaires joining you in the business, and Akshay very rightly also sort of taking this up as the duty and the responsibility of continuing to build and grow this legacy.